Hello students, welcome to Bal Govindam Learning App. In my last video, you have learned the English song We Shall Overcome. I hope it was clear truly. So you have done already the word meanings. Now here are some activities. You have to do all activities in your notebook. It doesn't matter कि you have book or not. Okay, so let's start. Number 1, choose the correct alternatives. Here are some options and you have to choose the correct one. According to the poet, what makes us free? Courage, peace, victory, truth. Yes students, if you read this poem or read this song very thoroughly, you know very well that truth shall make us free. So the right answer is truth. What does hand in hand mean in the song? Walking down the street, a parade, unitedly, making a trip. Yes student, hand in hand, हाथों में हाथ, that means unitedly, हम मिलकर चलेंगे, साथ चलेंगे. So the option C is right. What does deep in my heart mean? Deep in my heart mean what I sometimes hope, what I think, what I strongly feel, or what I like. So student, you know it very well. Deep in my heart means कि मेरे मन का पक्का विश्वास है. So what I strongly feel is the right answer. Now we move to the next exercise. Exercise B, say whether the following statement are true or false. So, we shall never overcome. यानी हम कभी overcome नहीं होंगे. No, wrong. The right answer is we shall overcome. So, it is false. We'll walk separately. No, it is also wrong. We will walk hand in hand. हम मिलकर चलेंगे, unitedly चलेंगे. Separately is the wrong answer. The truth shall make us free someday. Yes, it is the right. The truth shall make us free someday. So students, these are exercise A and B you have to do in your notebook. Now student, there are 3 question answers. Let's start. Why does the poet say we are not afraid? So, क्यों पोइट को ऐसा लगता है कि आज हमें किसी का डर नहीं है? Right? The answer is the poet says we are not afraid because he wants to develop a feeling of hope and triumph in the face of adversity. That means कि ऐसी स्थिति में ये गाने के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से पोइट ये हमें समझाना चाहता है कि आज हमें किसी का डर नहीं है. ही वॉन्ट टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ होप. ऐसा कह के वो हमें एक आशा की किरण, यानी एक हमें होप यानी आशा की किरण जो है वो हमें फील डेवलप करना चाहता है. एंड ट्रायम्फ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. होप और ट्रायम्फ मीन्स है विजय, विक्ट्री इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं. एडवर्सिटी मीन्स होता है बैड सिचुएशंस. जैसे कि हम अभी कह सकते हैं आज जो हमारे कोविड-19 की वजह से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डरा हुआ है, सो उसके लिए हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड. अब हम नहीं डरेंगे और हमारे पास क्या है, एक आशा की किरण है. इस एडवर्सिटी यानी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हम एक दिन ट्रायम्फ मीन्स विजय, विक्ट्री जरूर हासिल कर लेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. Which line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present? Which line in the song tells you the poet is not living peacefully at present? आज कौन सी लाइन से आपको ऐसा लगता है कि पोइट जो है वो पीसफुली नहीं है प्रेजेंट में? तो दैट इज द लाइन वी शैल लिव इन पीस समडे.
दैट मीन्स के पोइट एक होप कर रहा है कि हम एक दिन पीस यानी कि लिव इन पीस, हम एक दिन शांति से ज़रूर रहेंगे सम डे. So this line indicates that the poet is not living peacefully at present. So that is the hope. Okay. Number 3, how do you feel when you sing this song? कैसा फील करते हो जब आप ये गाना गाते हो? When I sing this song, it develop a strong feeling of hope and triumph of truth in me. मतलब ऐसा ये गाना जो हम गाते हैं इससे हमें रियली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और एक फीलिंग ऑफ होप, यानी कि एक आशा की किरण मन में जागती है कि हाँ हम एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे, हमें ज़रूर ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री मिलेगी ऑफ ट्रुथ इन मी, और ये इसका मुझे पक्का विश्वास है. सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू ऑल दीज 3 question answers in notebook. Remember it, after ending a question you have to skip a line and then start the second line. Okay, thank you. Now see the next activity, activity 2. Fill in the blanks with suitable word from the box. Here are 4 words given: overcome, afraid, truth, peace. I hope कि you know the word meaning of all 4 words. So you have to choose the correct one. I always speak the dash. Yes, here the right answer is truth. In the tricolor, white color stand for dash. White color stand for peace. A thief is always dash of the police. Thief is always afraid of the police. हमेशा चोर को किसका डर लगा रहता है? पुलिस का. With confidence we can dash a fear. हम क्या होंगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने से? Yes, overcome. That means हम परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे. If we have confidence, हम डर से बाहर आ जाएंगे. Overcome. Okay. So this is the exercise 4. You have to do in your notebook. Okay.